नमस्कार आपण समस्त को यह वीडियो बहुत बहुत स्वागत। तो आज वीडियो में आप सहित +3 5th सेमिस्टर पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स DSE 1 बा डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव 1 रो यूनिट 4 जहाँकि इंटरनेशनल रेफ्यूजी लॉ एंड इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ रो समस्त इंपोर्टेंट 3 मार्क्स क्वेश्चन अच्छे नोट्स आप सेट करी आ वीडियो आगे मुझे कहबी आपने पीडीएफ बा नोट्स टी किपर भाव डाउनलोड करेंगे। चलो स्टार्ट करवा। तो फास्ट हूँ व्हाट इज इंटरनेशनल रेफ्यूजी लॉ। तो इंटरनेशनल रेफ्यूजी लॉ कौन द गिव्स प्रोटेक्शन टू रेफ्यूजी ऑफ वेरियस पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो जो इंटरनेशनल रेफ्यूजी लॉ रही है कौन ना सुरक्षा दूसरी क्या मानक ना रेफ्यूजी मानक। रेफ्यूजी मैंने आप जानते जहाँ पूर्व आप जो 4th सेमिस्टर पाठ पढ़ती जो रेफ्यूजी थी रेफ्यूजी मैंने कौन शरणार्थी मानक वर्ल्ड रो वेरियस पार्ट रे जो विभिन्न भाग में जो रेफ्यूजी रही से सुरक्षा दिए। इंटरनेशनल रेफ्यूजी लॉ इट कंप्राइज ए रेंज ऑफ यूनिवर्सल एंड रीजनल कन्वेंशंस रूल्स ऑफ कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ नेशनल लॉ एंड स्टैंडर्ड्स ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड द यूनाइटेड नेशन हाई कमिशनर फॉर रेफ्यूजी। तो से कौन किसी कस्टमरी रूल अच्छी रूल ऑफ कस्टमरी रही इंटरनेशनल लॉ रही जनरल प्रिंसिपल रही ऑफ लॉ नेशनल लॉ एंड स्टैंडर्ड्स ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस एंड द यूनाइटेड नेशन हाई कमिशन फॉर रेफ्यूजीज। नेक्स्ट आम देखा राइट अबाउट द ओरिजिन ऑफ द इंटरनेशनल रेफ्यूजी लॉ। तो इंटरनेशनल रेफ्यूजी लॉ जो ओरिजिन किपर माने कि देखा द मॉडर्न इंटरनेशनल रेफ्यूजी लॉ कैन बी ट्रेस्ड बैक इन द लीगल एंड इंस्टीट्यूशनल इनिशिएटिव्स टेकन बाय लीग ऑफ नेशन अपॉइंट द हाई कमिशन फॉर द रेफ्यूजी इन 1921। तो 1921 से अपॉइंट करागला हाई कमिशन। ओके द इंटरनेशनल रेफ्यूजी ऑर्गेनाइजेशन was found 20 April 1946 in order to deal with the problem of refugee। तो इंटरनेशनल रेफ्यूजी कौन ना 20 एप्रिल 1946 जो रेफ्यूजी मानकर प्रॉब्लम को डील करने ताकू कौन फाउंड करागला 20 April 1946। It was replaced by the international protection in 1951। The step 2 of United Nations High Commissioner for Refugee UNHCR was came into being 1st January 1951। It mandate was general and universal। ता कौन गला पूरा यूनिवर्सल पे कौन मैंडेट करा गला अगेन इन 2002 पुणी 2003 रे द जनरल असेंबली रिन्यूड इट्स मैंडेट until the refugee problem is solved and the UNHCR was put on permanent basis। ओके तो यही प्रकार आसला प्रथम 1921 पर 1946 कौन फाउंड करागला ये सब देखिकी 1951 कौन इंटरनेशनल प्रोटेक्शन दिगला रिप्लेस करागला जे इंटरनेशनल प्रोटेक्शन रूपे पुणी यूनाइटेड नेशन हाई कमिशनर बाय UN हाई कमिशनर फॉर रेफ्यूजी वाज केम इनटू 1st January 1951 आसला पुणी कौन है ना 2003 रे जनरल असेंबली रिन्यू कला से सब मैंडेट को अंटिल द रेफ्यूजी जो शरणार्थी पूरा जो प्रॉब्लम को सॉल्व न हो जाए। ओके पर द यूनाइटेड नेशन हायर कमिशनर गोटे पुट ऑन परमानेंट बेसिक बोले होगला परमानेंट होगला। डिस्कस अबाउट 1951 कन्वेंशन ऑफ रेफ्यूजी लॉ। तो 1951 1951 कन्वेंशन एंड रेफ्यूजी लॉ कौन द 1951 कन्वेंशन इज ए लिविंग इंस्ट्रूमेंट ऑन ह्यूमन राइट्स ट्रीटी। इट इज ए कन्वेंशन रिलेटिंग टू द स्टेटस ऑफ रेफ्यूजीज। द 1951 कन्वेंशन रिमेन क्वाइट स्टेट कंसेंट्रिक। It represents undertaking an obligation accepted between the parties to respect, protect and accord certain rights and benefits to refugees. It is related with the fundamental principle of the refugee protection, particularly about non-refoulement। Okay, what is a refugee? Refugee माने कौन ना according to Article 1A2 of the 1951 Convention हिसाब रे a refugee is an individual who is outside his on her country of nationality or habitual residence जे कि कौन कंट्री पार्टी पड़ती मतलब शरणार्थी he is unable or unwilling to return due to the well founded fear and possession based on his or her race religion nationality political opinion or membership in the particular social group। The refugees must be outside for our country origin। The intrinsic part of the quality of refugees coursing of a इंटरनेशनल फर्निचर। तो कौन ना जो मैंने कि शरणार्थी मैंने कौन निज देश सुरक्षा नहीं देखिले कौन भी कारण नहीं पार से राजनीतिक कमिटमेंट हो पारे ओपिनियन हो पारे। ओके से जो जब गोटे शरणार्थी आउ कौन शरणार्थी हेले ताकू रेफ्यूजी बोली कह जाए जब आप न्यूज शुणुवे नॉर्थ कोरिया के शरणार्थी यूएस चली जाती कि अन्य देश को चली जाती। व्हाट इज नॉन रेफलमेंट और नॉन रिटर्न
तो द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ रिफ्यूजी लॉ इज नॉन रिप्लेमेंट जो प्रिंसिपल है कौन रिप्लेमेंट रिटर्न करेनि थोड़े आसिले मीन आसिले इट रिफर्स टू द ओब्लाइजेशन ऑफ स्टेट्स नॉट टू रिफॉल ऑन रिट्रीव ए रिफ्यूजी टू द फर्नीचर ऑफ टेरिटोरीज वेयर हिज लाइफ एंड फ्रीडम वुड बी थ्रेटेन on account of race, religion, nationality and members of particular social group or political opinion. तापर हम कहले जे ताको लाइफ को माने कोन क्षति अछि हानि करे चांसेस अछि से कौन से पॉलिटिकल सोशल ग्रुप हेबार कि निजर किछि पॉलिटिकल ओपिनियन कहि पारे नॉन रिप्लेमेंट इज यूनिवर्सली एक्नॉलेज्ड एज ह्यूमन राइट्स. नेक्स्ट टाइम देखिए व्हाट इज राइट्स ऑफ रेफ्यूजी को रेफ्यूजी अधिकार कौन थाए द 1951 कन्वेंशन 1951 जो कन्वेंशन थिला प्रोटेक्ट द राइट ऑफ रेफ्यूजी से कौन रेफ्यूजी मानकर अधिकार को सुरक्षा दिए द राइट टू फैमिली लाइफ राइट टू फ्रीडम ऑफ मूवमेंट कौन फैमिली कर पारे मूवमेंट कर पारे राइट टू लिबर्टी स्वतंत्रता सुरक्षा राइट टू एजुकेशन पाठ पढ़ी पारे justice employment and other fundamental freedoms as insane in the international and regional treaties are granted of refugee. Right to access the court are to be afforded as the same treatment as nations with other refugees. They are to be treated as a foreign national regarding wage, earning, employment and property rights. तो सेमान मध्य किछि राइट्स गोटे नागरिक भली सिटीजन भली अधिकार मिल थाए. ओके नेक्स्ट टाइम देखिबा व्हाट इज यूनाइटेड नेशन हाई कमिशन फॉर रेफ्यूजी बा यूएनएचसीआर कौन तो द स्टैट्यू ऑफ यूनाइटेड नेशन हाई कमिशनर फॉर रेफ्यूजी यूएनएचसीआर वाज एडॉप्टेड इन 15 डिसेंबर 1950 तो 1950 14 डिसेंबर ताको एडप्ट करागला बट द ऑफिस केम टू बिगिन 1 जनवरी 1910 तो ताको एडप्ट कराला 1950 किंतु 1 जनवरी 1951 रे ताहा कोन केम इनटू ओके इट mandate was general and universal. UNHCR was put on a permanent basis in 2003 when the General Assembly renewed its mandate until the refugee problem is solved. Next time देखिए what is refugee status determination by UNHCR. The refugee status determination is conducted by UNHCR is similar to asylum adoption conducted by the states. Asylum seekers meet with the eligibility officer and the trade by await the refugee status. It normally determine the refugee status on an individual basis. मैं कहली गोटे प्रत्येक इंडिविजुअल बेसिक रे तांको कोन अधिकार मिल थाए रिफ्यूजी मानकु. What is asylum? The asylum is international law referred to protection granted by the state or to a foreign citizen against his own state. तो कौन करना रेफ्यूजी मनर रेफ्यूजी आसला इंडिया को तो asylum माने कोन ना गोटे से लॉ गोटे जे आमे सुरक्षा देबा से मानको आम इंडियन कंट्री तांको सुरक्षा देबो का अगेंस्ट ना तांग निज कंट्री अगेंस्ट. ओके द पर्सन फ्रॉम हु asylum is established has no legal right to demand it and sheltering state has no obligation to grant it. Article 14 of the 1948 Universal Declaration of Human Rights 1948 मसीहा यूटीएचआर डिक्लेरेशन अनुसार आर्टिकल 14 अनुसार everyone has the right to seek and to enjoy in other countries asylum for possession. तो ऐसे पूरा क्लियर लिखा है जे प्रत्येक को पाखरे अधिकार अछि टू सीक एंड एंजॉय इन अदर कंट्रीज asylum for possession. ओके what are the limitation of 1951 convention? The 1951 convention is inadequate in the face of new refugee from ethnic violence and general based possession incentive security concern particularly terrorism and organized crime. It does not deal with the question of admission and neither does it oblige a state of refugee to accord asylum or such or providing the sharing responsibilities. What is the international humanitarian law? तो international humanitarian law कौन ना international humanitarian law as a set of rules which seeks to limit the effects of armed conflict of for human reason. तो जो आर्मी कौन सी से जो आर्म कॉन्फ्लिक्ट को आम किपरि ताको आम कौन लिमिट कर पारिबा. It provides person who are not no longer participating in the hostilities. It also restricts the means and methods of warfare. It is said to be part of international law. तो international humanitarian law मध्य international law रो गोटे पार्ट हम कहि पारिबा. Next on the right about the sum of agreements which are related to a prohibit weapons. So these are agreements are the 1954 Convention for the Protection of Cultural Property in the event of armed conflict, 1972 Biological Weapons Convention
ये सब कौन ना इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ ओके ता अंडर हम कहि नेक्स्ट कौन ना द 1993 केमिकल वेपन्स कन्वेंशन 1997 कोटा कन्वेंशन ऑन द एंटी पर्सनल मैन्योर द 2000 ऑप्शन प्रोटोकॉल into the convention on the rights of a child on the environment in armed conflict. Next time देखिए right about the application of international humanitarian law. The international law are related to person who are not or no longer participating in hostilities must be protected. It is legal framework applicable to situation of armed conflict in occupation. It is applies of a body of law that regulates the resource to armed forces. This is no other just at Bellum, which in the human character. It also seeks to the minimizing suffering and armed forces, but notably by protecting and assisting all victims of armed conflict to greatest possible extent. This is known just in below. That's the important no. Okay. तथापि हम देखि दिंतु नेक्स्ट देखिए राइट अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ आर्म कॉन्फ्लिक्ट तो इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ क्लासिफाइड आर्म कॉन्फ्लिक्ट अच्छु इंटरनेशनल आर्म कॉन्फ्लिक्ट एंड नॉन इंटरनेशनल आर्म कॉन्फ्लिक्ट तो दी भाग भाग होइछि गोटेला कोन ना इंटरनेशनल फर्स्ट इंटरनेशनल आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट नेक्स्ट सेकंड नॉन इंटरनेशनल आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट द प्रॉपर कैटेगराइजेशन of armed conflict is necessary to determine which is set out rule in 4 Geneva Convention of Additional Protocol 1 and Additional Protocol 2. The international armed conflict occurring between two or more states and non-international armed conflict which occur between state and non-governmental armed groups on only between armed groups. तो ये यूनिट 4 रो किसी 3 मार्क्स क्वेश्चन नोट्स जो मैंने कि नोट्स चाहती डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल रो लिंक दे देवी आपण माने से को नोट्स पाई पारे। थैंक यू टू ऑल फॉर वाचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट टाइम लॉन्ग क्वेश्चन आंसर पर डिस्कशन करिबा।